Pride Month, we as organized a workshop creating an inclusive and safe environment for students. So about my personal journey, who I am, it's very important to know why I represent this place. So I began my journey 7 years ago in 2017 when I completed my 12th. And since the very beginning, I had the intention to work for the community, come out as a co-ed leader, work for the community. In community हमारे ऐसा होता है कि लोग बाहर नहीं आ पाते हैं. They are very not open to come out. So I thought कि अगर कोई आ नहीं रहा है तो I should come forward and take the step so that I can work for people. उनकी एक आवाज बनूं. So I gradually rise to position by working in NGOs voluntarily. People started seeing my work on newspaper. Government started inviting me in their events. And slowly मैं छोटी छोटी पोजीशन से बड़े बड़े पदों पे मैंने काम किया. I worked as the youngest member of MP AIDS Control Board. I worked as a LGBTQ activist for the voice of youth. I worked for AIDS, and I created my own little organization in Bhopal to create a safe space all over Madhya Pradesh, uniting people whose voice aren't being heard, becoming a bridge between people, the marginalized community and government, so that I can raise their voices among them. So this was a little intro about me. So let's understand LGBTQ student issues, what they actually face. तो मेरे जैसा कोई इंसान जो कि अलग है और हमारे समाज में, भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा देखा गया है, पर्सन हु इज डिफरेंट इज नॉट लुकिंग लाइक अ कन्वेंशनल पर्सन. नॉर्मली एक महिला और एक पुरुष होता है. इफ द गाय इज identified as a masculine feature, so they identify as male. If the person possesses a feminine feature, they identify as a female. But there are certain people who identify as both. So people misjudge them that he a masculine feature hai, so he might be a boy. But it's kind of offensive that person. वो masculine feature होने के बाद ही अंदर से feminine features possess कर सकता है. So ऐसी situation में they act differently and people start harassing or bullying them because they are different. So they start discriminating with them. There are biases which actually affect their mental health issues, and they face a little more challenges than a usual student. So what impact does that brings, that this bullying brings to the mental health condition of that person? He is unable to perform as he can. Academically, he could have performed better, but not getting a positive environment, उसके मोटिवेशन काफी लैग डाउन हो जाता है एंड परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाती है. एक्सेल नहीं कर पाता अपने लाइफ में. लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं कम्युनिटी के लोगों के अंदर. सोशली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं एंड बहुत बुरे नतीजे होने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग. सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप, इस चीज को अब कोप अप कैसे किया जा सकता है. आई थिंक स्टूडेंट ग्रुप जब बनते हैं, जैसे IIMs में बने, IITs में बने, या किसी भी कॉलेज में DEI स्पेसिफिक क्लब्स बनते हैं या LGBTQ स्पेसिफिक क्लब्स, जहाँ एक सेफ स्पेस प्रोवाइड की जा सकती है एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जहाँ वो अपने जैसे लोगों से बात कर पाए. दे कैन रेज देयर वॉइसेस अमंग्स देयर ओन पीयर्स and can just create a advocacy group where they can talk to college so that they can create a safe environment जो उनके लिए ही एंड में better space create हो. Awareness create की जा सकती है amongst the group to people who are facing homophobic disorders. उनको गाइड किया जा सकता है, अवेयरनेस उनके साथ क्रिएट की जा सकती है. क्रिएटिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, अब ये क्रिएट कैसे किया जा सकता है. आई थिंक ट्रेनिंग कम्स, सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग कम्स एज द मोस्ट प्राइम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. ट्रेनिंग टीचर्स, अ टीचर डजंट नो कि हाउ टू बिहेव विद अ पर्सन हु इज डिफरेंट. दे लुक डिफरेंट, दे आर नॉट, they don't identify themselves as a male or female, they identify differently. So teachers don't know how to behave with them. So sensitization training can be done. Zero tolerance policy should be adopted. जैसे कि हम देखते हैं MBBS या मेडिकल स्टूडेंट, अगर वो किसी तरह का बुलिंग का शिकार होता है तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, उनकी डिग्रीज कैंसिल हो जाती हैं एंड दे आर स्ट्रेट अवे थ्रू आउट ऑफ द कॉलेज. इज दिस पॉलिसी एप्लीकेबल इन एनी अदर
प्रोग्राम ऑफ कॉलेज, नो। पॉलिसीज अभी उतनी वेल डेवलप नहीं है, बट की जा सकती हैं। आई थिंक विजिबिलिटी क्रिएट की जा सकती है ताकि जो लोग नहीं हैं उन्हें पता चले कि हाउ टू एक्ट विद देम। एक नया एम्बिट भी इसके बीच में आ जाता है कि पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए। टीचर्स एक पेरेंट्स ही तो हैं, एंड पेरेंट्स को समझाना टीचर्स का भी काम है। इंसान को पता कैसे चले कि हाँ, अपने पेरेंट्स या टीचर को समझाए कैसे जाए। तो दे आर नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। एक व्यक्ति जब अपने पापा मम्मी के सामने जाता है कि हम इस अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वी आर नॉट as you are thinking, we are different. So they start making them see few movies, और छोटे छोटे साइंस देना चालू कर देते। देन एक स्टूडेंट को पता लगने लगता है कि हाउ द टीचर इज बिहेविंग और हाउ द पेरेंट आर बिहेविंग। तो दीज आर द साइंस बहुत ज्यादा जो करने की जरूरत है हमारे एनवायरनमेंट में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप you enjoyed my PPT. Thank Yes, you. definitely, Akshay. Thank you so much. So I do have a question for you. Meanwhile, Narendra can share his screen again. So question to you, Akshay, is that you said you worked at AIMS Bhopal, and were you open there considering it was a government institution? And if you were, what challenges did you face after opening up? So when I entered AIMS Bhopal, considering it is a medical college and मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली बॉडी क्या होती है इंसान की, उनसे बेटर कौन हो सकता है ये समझने के लिए कि जो इंसान आइडेंटिफाई करता है मैन और वुमेन से ज़्यादा भी होते हैं। बट एक्चुअली आई रियलाइज दैट इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एंड व्हेन यू कंपेयर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन with a private institution, they actually have a great difference. In a corporate setup, they are DEI experts, they are sensitization training, workshop. People are more open-minded. And when you go to a government institution, people don't come from that exposed area. They don't have that much exposure. They haven't worked in diverse environment. They would be very rare that they can see a person who belongs from the LGBTQ community. So they don't know how to behave with them. So I had to struggle a lot to tell them what identity am, I belong to, because they don't know what actually gay is. When I said I am gay, it's a very funny incident. I said I am gay, so they started saying what is gay. Matlab, I said gay, Gay. They pronounce it as a guy. Matlab, are you a cow? I said no, it's pronounced as a gay. एंड इतना बेसिक नॉलेज भी लोगों को नहीं होता है कि उन्हें LGBTQIA क्या होता है आज के 2024 के ज़माने में इतनी बेसिक नॉलेज हो। LGBTQ को फुल फॉर्म तो छोड़ दीजिए, उसका एक वर्ड भी अगर उन्हें समझ आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो बुलिंग, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन जैसा एक नॉर्मल इंसान फेस करता है, आई ऑल्सो फेस अ लॉट, बट द HR वर रियली सपोर्टिव। अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी थे, सो आई हैड अ मिक्स एक्सपीरियंस।